साथ एक खास मेहमान हम ETNS स्वदेश पे जुड़ रहे हैं, पीबी बालाजी। और बड़े ही गर्व के साथ मुझे हमारे दर्शकों को ये बताने में बड़ा ही फ़ख्र महसूस होता है कि क्या कमाल की टर्न अराउंड हुई है टाटा मोटर के अंदर, सेल्स को लेकर के, आउटलुक को लेके, बैलेंस शीट को लेकर के। और स्टॉक ने तो इस साल भाई साहब कमाल और धमाल कर दिया, 50% से ज़्यादा ऊपर है। तो बालाजी एक एक प्रोत्साहन ज़रूर मिलता होगा एक मैनेजमेंट को जब वो देखते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर कितना अच्छा रिएक्शन आ रहा है। पर स्टॉक मार्केट में रिएक्शन अच्छा जब आता है जब कंपनियों के आंकड़े अच्छे आते हैं। तो क्या लग रहा है बालाजी, पिछले 2-3 क्वार्टरों में टाटा मोटर की ग्रोथ, मार्जिन और प्रोडक्ट प्रोफाइल काफ़ी बदली है। आपको क्या लगता है जो टाटा मोटर के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, एक मल्टी ईयर और मल्टी क्वार्टर का परिवर्तन है और अच्छे दिन नहीं बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं? थैंक यू निकुंज, थैंक्स फॉर हैविंग ऑन द शो। कि हमने इस पे ये काम तो अभी हुआ नहीं है, ये तो पिछले 4-5-6 साल से चल रहा है, वेयर वी आर मेथोडिकली फिक्सिंग द बिजनेस। एक के बाद एक हम उसमें जो भी इंटरवेंशन कर रहे थे, उसका जो भी परिणाम अभी मिल रहा है वो वही आप देख रहे हैं। और इसमें इफ आई टेक इंडिविजुअल बिजनेस JLR को लेंगे, तो उसमें हमने पहले उसको पिवट किया, फोकसिंग स्क्वायरली ऑन प्रीमियम लग्जरी। उसके बाद बहुत काम किया उसका ब्रेक इवन्स को कम करने के लिए, सो दैट वी ब्रिंग इट डाउन फ्रॉम द 600,000 यूनिट्स टू अबाउट 300,000 यूनिट्स। और जो लॉन्चेस हुए हैं, रेंज रोवर स्पोर्ट डिफेंडर, सब में एक्सीलेंट कंज्यूमर रिस्पांस मिली है। एंड दीज आर एक्सट्रीमली प्रीमियम रेंज व्हीकल्स जो हमारे लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन मार्जिन दे रही है। तो जब ऑपरेटिंग लेवरेज बन मिल रहा है विद लोअर ब्रेक इवन्स और उसमें प्रीमियमाइजेशन साथ में हो रहा है, उसी का रिजल्ट आप देख रहे हैं। तो JLR में और भी काम है अभी हमको करने के लिए। उसका पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन जर्नी जो है अभी चालू हो रहा है। पहला ब्रांड है हमारा रेंज रोवर, वो पहले इलेक्ट्रिक जा रहा है। अक्टूबर में उसमें ऑर्डर्स बुक कर रहे हैं और नेक्स्ट ईयर वी लॉन्च दैट। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्च फॉर अस। और उसके साथ हम 6 लैंड रोवर बेव्स भी साथ में लेके आएंगे, एक के बाद एक। और उसके बाद जैगवार होता है पूरा इलेक्ट्रिक। और ये हमारा फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी को हम एग्जीक्यूशन करते हैं। तो एक साइड पे प्रॉफिटेबिलिटी का फिक्स हो रहा है, कैश जनरेशन हो रहा है। दूसरी तरफ जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो फ्यूचर की तरफ कर रहे हैं। ये दोनों को हम मिलाएंगे तो फ्यूचर ऑफ जैगवार लैंड रोवर इज इन अ गुड प्लेस एंड वी हैव टू कंटिन्यू एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी फ्लॉलेसली। यही प्लान नंबर 1। दूसरा जो है वो कमर्शियल व्हीकल्स है। ये बिजनेस फ्रॉम अ डिमांड पर्सपेक्टिव द इंडस्ट्री में बहुत सारा प्रॉब्लम्स था ओवर द लास्ट 4-5 इयर्स। आप जानते ही होंगे। पहला था वो फाइनेंशियल क्राइसिस, वो IL&FS के टाइम पे आया था। उसके बाद आया BS6 माइग्रेशन, उसके बाद आया कोविड, उसके बाद आया स्टील प्राइस इन्फ्लेशन। सब में ये इंडस्ट्री वाज रियली हिट। एंड स्टार्टिंग लास्ट ईयर जो गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लान जो बजट में आई थी, उसके बाद ये बिजनेस इंडस्ट्री वाइज हैव बीन डूइंग वेरी वेल। हमने इसमें एक वेरी क्रिटिकल चेंज हमने की थी सितंबर लास्ट ईयर में, जो फोकस ऑन वॉल्यूम मार्केट शेयर को निकाल के फोकस स्क्वायरली ऑन रजिस्ट्रेशन मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबल ग्रोथ, ये दोनों हमने बदला। इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी काफी बढ़ी है। तो दिस क्वार्टर हम देखेंगे 9 पॉइंट ऑलमोस्ट डबल डिजिट एबिटा लेके आए इन अ वेरी वेरी वीक क्वार्टर फॉर अस। एंड ये क्वार्टर में हमने जरूर एक जगह पे स्लिप हुआ है हमारा, जो हम BS6 फेज 2 माइग्रेशन का गाड़ियां जब लेके आ रहे थे, उसमें एग्जीक्यूशन थोड़ा पैची रहा और उसमें काफी कॉम्प्लेक्स चेंजेस हम डाल रहे थे बिकॉज हम पूरा गाड़ी बदल रहे हैं एंड therefore we could have executed better. And उसका implication is why we lost some market share this quarter. But वो अभी जून में इम्प्रूव हुआ है, जुलाई और इम्प्रूव होगा, अगस्त तक ये पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद वी शुड कंटिन्यू टू ग्रो मार्केट शेयर एज वेल। और वो बिजनेस में काफी ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिलता है। तो ये कंबाइन करेंगे तो वी शुड हैव अ सॉलिड परफॉर्मेंस कमिंग थ्रू ऑन द कमर्शियल व्हीकल साइड। PV अच्छा किया है डिस्पाइट नो लॉन्चेस दिस क्वार्टर, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। 14.2% मार्केट शेयर हमने इंक्रीज किया 13.7 से, तो काफी इंप्रूव हुआ है उधर विदाउट एनी प्रोडक्ट्स, व्हिच टेल्स मी द पोर्टफोलियो इज गुड। और अभी हमारा लॉन्चेस चालू होने वाला है फेस्टिव सीजन के साथ, और EV लॉन्चेस भी होने वाले हैं। तो ये कमेंट करेंगे द फ्यूचर ऑफ PV आल्सो लुक गुड। एंड एज फार एज EV इज कंसर्न, 20,000 गाड़ी बेचा है, 19,000 समथिंग हमने बेचा है। और उसका which means that business now clocking will hit 100,000 cars of electric vehicles this year.
which is a huge step up in this business from where it was. उसके लिए launches will be very very aggressive and across the full portfolio. That is how हमारे launches हो गए उसके. And उसमें काम है profitability improve करने का. जो lithium battery prices कम होते जा रहे हैं, वो and PLI benefits भी आएगा. We should be comfortable making the profitability as well. So ये सब साथ में देखेंगे. तो ये नहीं कि हम एक बात कर रहे हैं, हम very differentiated focus for each vertical कर रहे हैं. उसके लिए separate teams हैं and all of them are marching in unison. तो ये combination में I think future is looking good. And we would want to, as long as we execute हमारा plan जो हम flawlessly execute करेंगे, which is what our मकसद है, therefore we should be well on track. बालाजी, पहले आपने DVR ADR के शेयर डिस्टिंग्विश करे, अब आप DVR के शेयर डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, तो कोई कारण है जिसकी वजह से आप कर रहे हैं? बिकॉज काम में मेहनत लग रही है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, क्या कारण है? See, DVR shareholders, they originally entered this at a 10% discount. तो 10% discount में DVR शेयर लिए थे 2009 पे. उसके बाद रेगुलेशन चेंज हो गई and therefore this asset class has become absolutely उसमें इंटरेस्ट, किसी को इंटरेस्ट नहीं है इसमें. और हम ही जो बचे हुए हैं, जो लार्ज प्लेयर है, उसका एक DVR है और कोई लार्ज प्लेयर के लिए DVR नहीं है. फ्रॉम 2010 हमने काफी काम किया इस पे. हमने उस पे QIP किया, उसके बाद में राइट्स इशू किया, उसके बाद FNO में डाला, काफी लिक्विडिटी इंफ्यूज किया. उसके बाद भी डिस्काउंट 40% से 50% चल रहा था. इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा. हमने डिविडेंड दिया 40% पे, स्टॉक प्राइस वेंट अप 45%, स्टॉक प्राइस वेंट डाउन 48%. सो यही चल रहा है. इसका 40-50% में चल रहा है इसका डिस्काउंट. सो जब लॉट ऑफ DVR होल्डर्स हैव बीन रिप्रेजेंटिंग टू अस कि इस पे कुछ करें, क्योंकि इसका they are not able to participate in the Tata Motors story through this, and इसमें can we do something about the discounts? So our it's absolutely from a Tata Motors perspective, ये हम खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि उतना कैश नहीं है हमारे पास पूरा उसको निकालने में. We have our own problems in Tata Motors, and इसको सीधा just swap नहीं कर सकते because the articles don't allow it. तो इसमें legally and structurally we have challenges. Hence ये हम सोच के आए हैं कि ये स्ट्रक्चर जो करें उसका पूरा एक्सटिंग्विश कर देंगे और एक्सटिंग्विश करके आपके पास 10 ए ऑर्डिनरी शेयर और DVR शेयर्स है, तो उसके बदले में हम 7 ऑर्डिनरी शेयर देंगे. उसका इफेक्टिव डिस्काउंट जो अभी 40-50% चल रहा है, उसको हम 30% लेके आएंगे, which is a closing price पे 23% प्रीमियम है, which is good for the A ordinary holder. And it from an ordinary shareholder perspective, total capital base goes down by 4%. So therefore, सबका EPS बढ़ता है 4%, which should reflect in the price of the share. Implication of this means from Tata Motors perspective, with ADR gone, DVR gone, हमारा strategic flexibility बढ़ती है, क्योंकि हम कोई rights issue करना है, कोई capital raise करना है, कोई M&A करना है, उसके लिए हमको पैसा shareholder से चाहिए. We don't have to think about all this, and that's actually good from a risk perspective for Tata Motors. तो इसलिए तो ये किया है. And very seldom do you get structures where it is win-win-win for everybody. ये ordinary holder के लिए straight away 23% मुनाफा, continued participation in Tata Motors. Because हम cash दे देंगे, so they will not participate in Tata Motors going forward. So a lot of people will be upset. So this way they continue to participate. They get the premium, continue to participate. Ordinary holder के लिए 4% straight EPS uplift. और liquidity जो है, total number of outstanding ordinary shares actually goes up by 18%. So share और भी liquid होएगा in the market. And actually very uniquely, promoter जो है, उनका voting rights कम हो रहा है, which means public voting rights are going up. So it is very very shareholder friendly. That is the third point. And from a company perspective, इसमें हमारा कोई cash outflow नहीं है. तो हमारा net debt plan जो है, वो एकदम इसका कोई असर नहीं पड़ता है. So win-win-win for ordinary, ordinary and company. So we said we should do this, and that's what we are executing. It will take 12-15 months to execute, but we are confident that shareholders will support it. हमने काफी institutional shareholders से बात की है कल शाम से लेके, और we are getting full support from all of them on this particular transaction. They like it, so it is good for them also. So that is the whole story.
तो बालाजी, क्योंकि कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई ये जो डिस्काउंट और जो वैल्यूएशन कर रहा है इसका मूल्यांकन कैसे हुआ है, बिकॉज टाटा मोटर का जो बिजनेस है भविष्य में बेटर हो रहा है। स्टॉक मार्केट के अंदर हमेशा भविष्य की ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। टाटा मोटर का जो पी मल्टीपल है वह ग्लोबल ऑटो कंपनी से कम है। तो क्या ये जो प्रीमियम हालांकि इंडिपेंडेंट एजेंसीज ने करा है, आर दे कैप्चरिंग इन द अपसाइड फॉर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स ऑल्सो? See, if you look at the PwC did the valuation for the stocks, what should be the consideration ratio? What we did on top of it is fairness opinion. This time we got it from two different companies. For the A ordinary holders, Citibank was representing. They did the fairness opinion. Ordinary holders के लिए Access Capital did it because we wanted to keep that separate. Two different views. Why is this important? कल NCLT में जाएंगे. There's going to be two different EGM. EGM for A ordinary separate, EGM for ordinary separate. उसमें हम majority of minority for each of them separately to be taken, because both these parties have to separately approve without promoter being involved what is the whether they agree with this or not. इसका मतलब ये है कि इसका there's only one right answer for this, and that has to be pitch perfect. You can't swing either way, left or right, because if you swing too much on the left, other person will reject it, in which case there's no scheme. And if it gets rejected, then DVRs will remain forever. You cannot take it out. So it is pitched perfectly, and hence our submission to all shareholders. The reason we have taken so much time, इसके लिए इतना time लिया हमको उसको सोच के solution लेके आने में, is to ensure we satisfy all the people. Hence, we believe it's a fair pitch that is there, and would require support from all the shareholders for that, because we have put our best foot forward on this, and we need to have separate views from ordinary people and the ordinaries, and to give their approval for this. बालाजी, आखिरी दो सवाल। अब टाटा मोटर के अंदर हमें क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? सेमीकंडक्टर की समस्या खत्म हो चुकी है, डेट की समस्या खत्म हो चुकी है, जेएलआर में धीमापन खत्म हो चुका है, तो अब अगला ट्रिगर टाटा मोटर के शेयर होल्डर्स के लिए क्या हो सकता है? I think डेट का सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है, हमको खत्म करने का है. JLR hasn't only finally, they have still to execute their plan. पूरा electrification करना है. I think as news people, you go 10 steps forward. We have to walk the 10 steps. So I would simply say, let's execute everything. And the better we execute, more other strategic options in front of us. So therefore, I would leave it. Our focus is squarely putting our heads down and executing what we already have laid out as a far-reaching strategy, which will change the face of Tata Motors. But जो भी जर्नी है उसका एक ही वो नेक्स्ट स्टेप इज मोर इम्पोर्टेंट देन द 100 स्टेप. सो वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द नेक्स्ट स्टेप व्हाइल वी नो एग्जैक्टली वेयर वी आर गोइंग फॉर द नेक्स्ट 100 स्टेप्स. तो मेरा आखिरी सवाल बालाजी है कि टाटा मोटर की 3 साल की जर्नी में आपका इंटरनल विजन क्या है? 5 साल की जर्नी में आपका इंटरनल विजन क्या है? आप क्या ऐसा अचीव करना चाहते हैं जिसको आप बोलेंगे कि भाई हमने जो लक्ष्य सेट करा था वो हम उसको अचीव कर चुके हैं या करना चाहते हैं? See, each of the businesses we have called it out. Take JLR. JLR needs to become a 10% EBIT business and a fully electrified future in premium luxury. That's the vision for JLR. For commercial vehicles, strategy is to win decisively. Therefore, getting back to a strong double-digit EBITDA margin while continuing to gain share, unka vision. Passenger vehicles reach the double-digit EBITDA, win sustainably, continue to generate cash, continue to keep improving market share. ये उनका plan है. Electric vehicles create the market, invest for aspiration, create the market, and continue to drive market penetration. Unka काम. I think we have well cut out jobs for each of those. And overall, when you put it all together, this business has to be net cash and generating solid dividends. That's what we are at an overall level that we are planning for. When all these individual cylinder fire hota hai, then I think that also comes together. So that's our plan. चलिए बालाजी, बहुत बहुत शुक्रिया एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू अचीव योर विजन एंड थैंक यू फॉर योर टाइम. Thank you. Thanks, Nikunj. Thanks for having me on the show.